So we are going to see pure rotational motion. Let's start pure rotational motion. In pure rotation, every point on the body moves in a circle whose center lies on the axis of the rotation. Means we have taken this as an axis of rotation and our rigid body is this. So every point on this rigid body like M1, M2, M3 will perform circular motion with a radius of R1, R2 and R3 like this. Let me zoom this figure. Just wait. So this is, so our axis of rotation is this, and our rigid body is performing pure rotation with omega, and every point on this body M1, M2, M3 performing a circular motion with radius R1, R2 and R3, and their center is on the axis of rotation. Axis of rotation पे इनके centers हैं. So वही हमने यहाँ पे लिखा है क्या, in pure rotation every point on the body moves in a circle whose center lies on the axis of rotation, and every point moves same through the same angle during a particular time of interval. मतलब कि अगर हमारी बॉडी ओमेगा से घूम रही है तो ये जो m1 पॉइंट होगा ये भी ओमेगा से ही घूमेगा, और ये जो m2 होगा ये भी ओमेगा से ही घूमेगा. मतलब कि इन सभी पॉइंट्स की जो है एंगुलर वेलोसिटी इनकी भी ओमेगा ही होगी. तो अब इनकी टोटल काइनेटिक एनर्जी हम कैसे लिख सकते हैं, आइए देखते हैं. टोटल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू होता है हाफ ऑफ एम इंटू वी स्क्वायर. यहाँ पे वी वन हो जाएगा, वी वन इक्वल्स टू ओमेगा आर वन, वी टू इक्वल्स टू ओमेगा आर टू एंड वी थ्री इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर थ्री. सो हाफ एम वन इंटू वी स्क्वायर की जगह हाफ एम वन ओमेगा आर वन का होल स्क्वायर, हाफ एम टू ओमेगा आर टू का होल स्क्वायर एंड प्लस हाफ एम थ्री ओमेगा आर थ्री का होल स्क्वायर एंड सो ऑन. So after taking common omega square, we can write this half into omega square into m1 r1 square plus m2 r2 square plus m3 r3 square and so on. So this constant term or this term is known as moment of inertia. What? So we can say that kinetic energy equals to half of I into omega square, half into I into omega square, where I is moment of inertia and omega is angular velocity of the rigid body. So now let's talk about moment of inertia. Moment of inertia. Moment of inertia. Moment of inertia of a discrete mass system. अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए बात करते हैं तो देखते हैं कैसा होगा. ये हमारी होगी एक्सिस, और ये इससे जो दूरी है परपेंडिकुलर दूरी ये है r, एंड जो मास है वो m है. सो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I इज इक्वल्स टू m इंटू जो दूरी है परपेंडिकुलर r का स्क्वायर, I इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर. सेकेंड केस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस मास सिस्टम की अगर बात करें तो कंटिन्यूअस मास सिस्टम लाइक जैसे ये हो गया हमारा एक रॉड, ये हमारा रॉड हो गया, ये कंटिन्यूअस मास सिस्टम है. इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो इसके लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है. दैट इज आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू आर स्क्वायर. यानी डी एम मास हमने लिया, एक्स दूरी पे जाके हमने डी एक्स चौड़ाई का डी एम मास लिया. सो डी एम इंटू जो दूरी इसकी है आर, यहाँ पे एक्स है तो हम एक्स लिखेंगे अभी, ये आर स्क्वायर. सो आइए देखते हैं कैसे किया. एक्सिस से हम इस रॉड के लिए अगर हमें लिखना है जिसकी मास m है और लेंथ l है, यहाँ से x दूरी पे जाएंगे, यहाँ पे dx विड्थ की एक हम लेंगे, फिर इस dx का जो dm होगा, dm इक्वल्स टू m बाई एल, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx, यानी ये dm की वैल्यू हो गई. सो I equals to integration of dm into r square. So we have putted the value of dm in this m by l dx into r is equals to x, so x square. After that we have integrating this from length 0 to length l. So m by l is constant, that's why I have taken out m by l, 0 to l x square into dx. That will become integration of x square dx is x cube by 3. So m by l in or x cube by 3, where we have limit 0 to l. After that I have put it m by l into l cube by 3 minus 0 y 0, because when we put x equals to 0 then the whole term will become 0. So finally we get moment of inertia is I equals to ml square by 3 for a rod from this axis. So for this axis and this rod of mass m and length l,
the moment of inertia becomes I equals to ml square by 3.